शांति की मूर्त थी, स्नेही थी। मैंने उनको बहुत नज़दीक से देखा है। वो हर एक को अपना समझती थी और कोई भी बात पूछते थे तो 2 शब्दों में परंतु पावरफुल जवाब देती थी, जिसका कि हल निकलता था और समझ में आता था। दादी जी यहाँ रिट्रीट सेंटर, ओम शांति रिट्रीट सेंटर में काफ़ी समय रही थी और दादी जी को ये रिट्रीट सेंटर इतना अच्छा लगता था, कहती थी दिल करता है मैं यहाँ पर ही रह जाऊँ। हमने दादी जी के साथ रह करके कैसे एक दूसरे को समझना होता है, क्या दादी की शिक्षाएं थी। रात को दादी रोज भाई हम बहनों को शिक्षा देती थी और सवेरे के समय दादी जो भी ORC के भाई बहनें हैं वो दादी के पास आते थे। दादी सबको दृष्टि देती थी और बादाम खिलाती थी। बीच बीच में सब भाई बहन आके मिलते थे, दादी के साथ खेलते भी थे और दादी भी खेलती थी, क्योंकि दादी को एक्टिव करना बहुत ज़रूरी था। बहुत शांत, एकदम जैसे कि मूर्ति की तरह। तो इसलिए दादी एक्ट में आए, कुछ बोले, कुछ सुनाए, वो दादी को कहना पड़ता था कि दादी वहाँ स्वर्ग कैसा होगा, दादी ये कैसी है, वो कैसे, सब दादी सुनाती थी। अगर आप दादी की पिक्चर देखें ना यहाँ की, तो कैसे दादी हम सबके साथ खेल रही है, बोल रही है। और रात को भी दादी खूब अच्छी तरह प्यार से मिलती थी और कभी हमको ये नहीं कहती थी अभी टाइम हो गया है, अभी जाओ। मैंने मधुबन में भी अनुभव किया है कि मैं रात को दादी के कमरे में जाती थी। पहले मैं बड़ी दादी के पास जाती थी, तो बड़ी दादी का जब ऑपरेशन हुआ था तब उस समय मुन्नी बहन ने मना किया था। फिर इसके बाद हम गुलजार दादी के पास जाते थे। हम 3-4 बहनें थी मधुबन की, और गुलजार दादी हमको बहुत शिक्षा वाली बातें सुनाती थी और हम कुछ भी सुनाते रहे। वो कभी ये नहीं कहती थी कि आप क्या बोल रहे हो, क्या कह रहे हो, नहीं, शांत होके सुनती रहती थी। और जब हम दादी के कमरे से 11 बज जाते थे, जब हम दादी के कमरे से जाते थे तो दादी कहती थी बाबा याद है, एक बाप की याद में सोना, जो भी बातें की है उसका चिंतन नहीं करना, हमेशा बाबा को सामने रखना और सवेरे बाबा को गुड मॉर्निंग जरूर करना। ये दादी की शिक्षा होती थी। और जब मैं वहाँ थी तो दादी को हम कई बार कहते थे दादी आप हमारे साथ पिकनिक पर चलो। तो मैं देखती इतनी सहज स्वभाव की थी कि दादी सहज ही मान जाती थी, कहती थी ठीक है। तो जो मधुबन की बहनें थी, मधुबन की बहनें कुछ ज्ञान सरोवर की भी आती थी, हॉस्पिटल की भी आती थी। तो दादी हमारे साथ पिकनिक पर पीस पार्क में जाती थी। वहाँ पर पहले हमारा क्लास कराती थी, अच्छी शिक्षाएं देती थी और उसके बाद कहती थी आप कुछ सुनाओ, कोई कहानी, कोई चुटकुला, कोई अच्छी बात हमको सुनाने के लिए भी कहती थी। और इसके बाद हम सबका की पिकनिक बना, खान पान जो था, जो हम लेके जाते थे वो होता था। और दादी ने कभी अपने मुख से ये नहीं कहा है कि आज ये ठीक नहीं है, आज ये ठीक नहीं है, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था। दादी ने कभी अपने मुख से नहीं कहा।
एकदम शांति की मूर्त। जब देखो दादी योग में बैठी है, मग्न अवस्था में बैठी है, जैसे दादी को कुछ किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं, जिसे हम कहेंगे निरसंकल्प देवता। यही कारण है कि दादी अंत के समय निरसंकल्प होने के कारण, एक बाबा की याद होने के कारण अव्यक्त वतन में बैठी, अव्यक्त वतन क्या फरिश्ता बन गई। तो ये बाबा दादी की विशेषता थी। तो ऐसे और बहुत सारी विशेषता थी, अगर हम सुनाने जाएं तो बहुत है, क्योंकि बहुत टाइम दादी, मैं जब वहाँ जाती थी पांडव भवन में शुरू में, तब दादी हमेशा पूछती थी कि ठीक हो, कुछ खाया। जाते समय पूछती थी खाना पीना लिया। मैं चंद्रमन दादी के साथ जाती, तो कहते खाना पीना लिया, कुछ चाहिए तो बताओ। हम कहते नहीं दादी सब कुछ मिला, सब ठीक है। तब मतलब मैं ये सोचती थी कि इतनी बड़ी दादी और मेरे से पूछती है कि आपने कुछ लिया या नहीं लिया। तो ये देख के मेरी भावना दादी के प्रति इतनी थी। जब मैं पहली बार दादी से मिली थी तो मेरे को इतना लगाव हो गया था कि मैं सोचती थी कि मैं इसके साथ रहूं। और जब वो दिल्ली जा रही थी, मेरे को भी दिल्ली जा, तो मेरे को इतना लगाव था कि वो कहाँ होगी। जैसे कि किसी के से लगाव हो जाता है ना, ऐसा पहली बार में, एक ही बार में ऐसा लगाव। मतलब वो इतना आकर्षित करती थी, उसके गुण, उसकी शांति की मूर्त, उसका देखना आत्मिक रूप से इतना आकर्षित करता था कि हम सदा उसके पास खींचे चले आते थे। जब भी दादी आती थी हमको इतनी खुशी होती थी, बात मत पूछो। मोर को देख के तो दादी बड़ी खुश होती थी। मोर आता था दादी के कमरे के बाहर और दादी उसको कई बार खिलाती थी। नहीं, ये जो थोड़ा कुछ होता था दादी के हाथ में देते थे तो दादी खिलाती थी। बगीचे में बैठते थे तब भी सब बहनों से मिलती थी, तो हमको बहुत अच्छा लगता था। ऐसी प्यारी गुलजार दादी हम समझते हैं आज भी हमारे साथ है। अभी भी हम गुलजार दादी का कमरा वैसे ही रखा हुआ है जैसे गुलजार दादी का था। ऐसे महसूस होता है जैसे अभी भी गुलजार दादी कमरे में है। ओम शांति। ये सिस्टर हरीश भाई है, हरीश भाई का वीडियो बहुत अच्छा है। हरीश भाई है। Om Shanti. Wow, it's so lovely to be back in ORC after 4 long years, it seems, because we last were here in March 2020, just when the pandemic was starting. And it's especially lovely to be here on this day, Dadi Gulzar ji's Memorial Day. So, Dadi Gulzar ji and Dadi Janki ji both left since we were here before. And Madhaban, the feeling of the Dadi's presence is very powerful there, and Dadi Gulzar ji's presence is very powerful here as well. So we're here again for a teacher training. Sister Margaret and Mary Jean are here, as well as a couple of sisters from London to help. And we're looking forward to being with you over the next week. So thank you very much for your sweet hospitality. We're just amazed at the changes that have happened since we were here in 2020. Huh? Okay. First, I'm going to finish.
um, the greenery, the vegetation has just taken over this place. It's hard to recognize everything. It's hard to even find our way around. It's become quite a forest of flowers and beautiful foliage. And the atmosphere is very, very lush and green. And so I'm sure within each one of you, that same lushness and greenness of spirituality has also blossomed. So many memories of Dadi Gulzar. One that comes prominently to my mind is when she visited USA, and I don't even remember which year it was, but there was a retreat in San Francisco, and I think this was before Anubhuti because I don't remember her being there. But we took her on a cruise out in the bay. And it was such a lovely time being in this boat with Dadi and Baba and the Brahmin family cruising around San Francisco Bay. And we all got to sit next to her, and I have a photo of her with her arm around my shoulders. She was so silent in so many ways and so powerful. And she taught, she was the only of Baba's daddies or children that I could sit in her class and I could almost understand what she was saying, even though she was speaking in Hindi. Because she talks so much about the golden age and so much about the future of us. And she was so, in her presence, she was so powerful that even when you just were in her company for a short while, you could feel the connection with her and with Baba. Right? You must have experienced. It was not just Dadi, it was always Baba. And if you sat with her when she was eating, she didn't talk much. She just remembered Baba, and you've had the feeling you were eating with Bab Dada. Yeah? So we have those experiences, and I'm sure you had so many more here in ORC, to connect you with Baba through the Dadis. And I remember one time we were in San Francisco again, this was at that time, and we were having lunch with her, and she wanted some food. I don't remember what it was, but they managed to bring that food to her. And she ate it with so much detachment. You wouldn't even know that she wanted it. It was really a lovely experience to see how you could be so connected with Baba, still enjoy something, and be so detached. Yeah? She was such an example of love and detachment and sweetness and closeness to Baba. So that's an example that we all are trying to keep in our minds. And now Margaret's coming. Margaret is really taking charge of the teacher training this time. And it's going to be a fresh experience for everyone. Om Shanti. There's actually a few memories of Dadi Gulzar, many, because obviously she was the instrument for Baba, for us to hear all the Avyakt Murlis. But I remember one time there was an example of how much respect she had for the other daddies. And there was a book, quite a large book, that was made of Dadi Janki and had lots of pictures of Dadi Janki and the service that Dadi Janki. It was really quite a big book. And
I had the role of bringing it on the train, one copy for Dadi Gulzar and another copy for Brij Mohan Bai, and they're quite heavy. And I remember I went to meet Dadi Gulzar to show her the book, and she sat me down and she went through every single page, and those around her were trying to hurry it all on. And she was completely detached, and she looked at every page, every picture that had Dadi Janki in. And it was a really good lesson in how it was like she had received a gift from another Dadi, and she was really, really respectful of that, independent of what was going on around her, not influenced. Another little memory was one time when she came to GLC. Probably it was for the opening of GLC at that time. And I was quite young in knowledge at that time. And I remember that I was talking, I wanted to catch someone's attention, and I called out, and I turned around, and there was Dadi Gulzar, and she went, in the sweetest voice, Om Shanti. So I got my message. And I think the other memory is one time when we were here, I think it probably was during one of the trainings, and she arrived, and you just could feel the whole atmosphere changed, and very similar to one time that she arrived at Heathrow Airport, and a whole group had gone from London, Oxford, nearby to meet her. And as she came through, it's like there was a whole shift in energy, and it was like we were all caught in this bubble of very high-level spiritual energy, and people were around doing their business with their luggage, all the thing, and it was almost like we were transported into another dimension, a subtle dimension, and it gave an insight to what Baba says when at the end it's like we will be in a different dimension than the rest of the world, and they won't see us. So Om Shanti. दादी अव्यक्त बनी, गुलजार